All right. Welcome everyone. Yali Madad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'd like to welcome you to this webinar today. This is going to be our 6th webinar of the series. We started last year, about 5 months back. और ये जो सीरीज है हमारी करियर फैसिलिटेशन सीरीज, इसमें हम ऑलरेडी 5 वेबिनार्स कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेकर स्कॉलरशिप प्रोसेस से लेकर करियर्स इन कंप्यूटर साइंस, स्टेम एजुकेशन जैसे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि आपके सामने एक और वेबिनार लेकर आए हैं आगा खान एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। मेरा नाम इमरान भामानी है और मैं एक वॉलंटियर हूँ विद आगा खान एजुकेशन बोर्ड करियर पोर्टफोलियो। और मेरा जो काम है वो डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के लिए ऐसे वेबिनार्स लेकर आना है जिससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो और हम लोकल एजुकेशन बोर्ड्स को भी सपोर्ट कर सकें, रीजनल एजुकेशन बोर्ड्स को भी सपोर्ट कर सकें। डिजिटल वेबिनार्स का ये फ़ायदा होता है कि हम हमारी रीच ज़्यादा होती है, हमें पूरी दुनिया से लोग अटेंड कर सकते हैं और अपने वक्त पर कर सकते हैं। यूजुअली 1 घंटे का हम ये वेबिनार करते हैं, कभी 1 घंटे से कुछ ऊपर भी हो जाता है, पर हम तरजीह देते हैं कि आपके कोई भी अगर ऐसे सवालात हों, क्वेरीज हों, हम उसका जवाब भी दे सकें। आज का जो टॉपिक है स्टडिंग अब्रॉड, टू गो और नॉट टू गो, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इसमें हम इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है। मैं अभी इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ हाउस रूल्स बता दूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1 से सवा घंटे का ये वेबिनार होगा। आपके पास चैट ऑप्शन हमेशा ऑन रहेगा जिसमें आप अपने सवालात लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द वेबिनार हम इन सवालात के जवाबात ले सकें हमारे प्रेजेंटर से, हमारे गेस्ट से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सवालात को जनरल रखिए, क्योंकि इसमें participants from all over, all walks of life. We have parents, we have students, we will have teachers, college professionals, employers will be available. So आप अपने सवालात को जनरल जितना रखेंगे इतना दूसरों को फायदा होगा। स्पेसिफिक सवालात के लिए यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक सवालात या पर्सनल स्पेसिफिक सवालात हम इस सेशन में कवर नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आप हमेशा अपने लोकल एजुकेशन बोर्ड से राब्ता कर सकते हैं। So let me quickly jump into it. I'd like to introduce our guest today, Akbar Motani Sr. Now currently he heads the Thailand's Business for Insider, which is a marketing technology organization. He works as a commercial director and country manager. He has worked with some of the Fortune 500 companies across Asia Pacific region, assisting them with their digital transformation strategies. And he's himself been a student abroad and spent more than 15 years there. He joins us today from Bangkok, where it's almost more than 10 p.m. right now, and he's also serving it with National Council. Welcome, Akbar, and thank you for taking time out for us today. No, thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Yali Madad to everyone. Thank you, Imran, for having me here. It's an absolutely honor and pleasure to be able to provide information that I can. I think before I start, एक disclaimer मैं देना चाहूँगा यहाँ पे सबको, वो ये है कि whatever opinions that I share here are my personal opinion. These are not institutions' opinions या Aga Khan Education Board का opinion नहीं है. These are my personal experiences, my personal opinion. So जो भी prerogative, जो भी आपके सवालात होंगे,
based on my experience living outside abroad for over 15 to 16 years now. What I have learned, what I've dealt with a lot of international students throughout and still am. So उस basis पे जो भी है, I will be sharing as best to my ability and best to my knowledge, whatever I can. Yes, thank you. Thank you for clarifying that, Akbar. And I think I'll just add कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो काम है being career facilitators, हम हमारी जमात को वक्तन फवक्तन इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं. उसमें हमारा कोई नेगेटिव व्यू या कोई पॉजिटिव व्यू नहीं आता. We try to have all neutral conversations where we do not support any particular decision. Obviously, चाहे यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस हो, स्कॉलरशिप सिलेक्शंस हो, बाहर जाके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों का अपना डिसीजन होता है. What we try to do is we try to cover all the aspects of the topic. और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको इसी नज़रिए से लेंगे और हमारे साथ इंटरेक्शन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. अगर वक्त हुआ हमारे पास, we will turn on the audio and the mics, and you can also ask questions over the mics. So let's quickly jump into it. Akbar, I'll start with asking you some very common questions जो कि students के होते हैं. Let's ask you the first question. सबसे पहला, I think जब बात आती है कि बाहर पढ़ने जाना है, सबसे टॉप आपके जहन में जो आता है वो है कि which country is the right country to choose, right? तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Sure, thanks Imran. Before I get into the answers, just a couple of things. सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ कर दूं मैं कि I've lived अच्छा before even that, चूंकि मैं पिछले 15, 16, 17 सालों से पाकिस्तान से बाहर हूँ, so naturally जो है वो उर्दू मेरी बहुत कमजोर हो गई है. उर्दू बोलने का मौका नहीं मिलता है. So I tend to automatically I tend to automatically switch to English. So I apologize, माजरत, अगर किसी भी मौके पे किसी भी जगह ऐसा लगे कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई या I've gone too fast, प्लीज टेक्स्ट कर दें, मैसेज में डाल दें कि अकबर भाई यार ये रिपीट कर दो. I'm more than happy to repeat. So I've lived in Australia for 10 to 12 years. जिसमें primarily I've been working with large enterprises, managing a lot. I've worked with a lot of large enterprises, telecom, banks, government in Australia and New Zealand. And then for last 4 years, I've been part of Far East. So 3 years I lived in Singapore, and now for more than a year and a half, I am living in Bangkok. So I've traveled a lot because of my work within Asia Pacific, except China. China I haven't been yet, but China and India I haven't been. But other than that, I've traveled a lot. I mean, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam, Thailand, obviously here, US, Canada, UK. So work has taken me to many places with many projects. So उस basis पर will be sharing. So आपने पहला सवाल ये पूछा कि भाई कौन से मुल्क में जाके पढ़ना चाहिए. तो उस सवाल का जो जवाब है वो मैं एक सवाल से करूंगा. जितनी भी हमारी ऑडियंस है, आई थिंक आई नीड दिस वन. एक सवाल है मेरा सबसे, प्लीज आप टेक्स्ट मैसेज में डाल दीजिए. हम में से कितने लोग, आई थिंक सबको ही जाना है बाहर, पर सवाल ये है हम में से कितने लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं और हम में से कितने लोग बाहर सेटल होना जाना चाहते हैं. ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये लिख दें कि एजुकेशन या सेटलमेंट. सो आई वुड नो कि जो ऑडियंस है वो क्या देख रही है, so then I can address accordingly. So कितने लोग पढ़ने जाना चाहते हैं in terms of education, और कितने लोग जाना चाहते हैं education as an excuse but to settle abroad. Okay, so we getting the answers. Great. Okay, both. Okay, education, settlement. Okay, just for PR. I like that, Sakib. Thank you for being honest. I appreciate it. Okay, I think I've got most of the answers, understand. So I think it's almost 50-50 or probably more of the settlement.
ये सवाल पूछने का मकसद इसलिए है बिकॉज अगर आप सेटलमेंट देख रहे हैं, राइट, और एजुकेशन आपका बहाना बन रहा है, इसका मतलब है कि एजुकेशन जो है वो बाय प्रोडक्ट हो गया। फोकस आपका एजुकेशन नहीं हुआ, फोकस आपका सेटलमेंट हुआ ओवरसीज, राइट। अगर आपका फोकस सेटलमेंट है ओवरसीज तो फिर तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट हो गई आपकी। फिर तो देन यू हैव टू लुक फॉर अ कंट्री वेयर अलाउज यू to go and live and settle down and have options, easy options to get your residency and your citizenship, right? तो फिर तो वो फोकस उस तरफ से हो गया ना, तो फिर स्टडी तो फिर बहाना हो गया। अगर आपका फोकस पढ़ना है, एजुकेशन है, तो फिर तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। फिर तो सवाल ये है कि अगर आपको पढ़ने जाना है लाइक रियली जेन्युइनली एज अ लेजिट स्टूडेंट, देन आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। क्योंकि गॉन आर दोज डेज, आई मीन यहाँ पे लाइव आई थिंक मेरे मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे इस वक्त पाकिस्तान में बैठे। गॉन आर दोज डेज कि जब हम बड़े हो रहे थे या जब हम पढ़ रहे थे, हम हाई स्कूल में थे, इंटर कर रहे थे या ओए लेवल्स कर रहे थे, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी बहुत ज्यादा करने की, राइट। इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस नया आया था। मुझे आज भी याद है कि मेरा फेडरल में, मैं चूंकि इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो फेडरल में हमारा पहला बैच था कंप्यूटर साइंस का मैट्रिक के अंदर। आई स्टिल रिमेंबर वी वर द फर्स्ट वन। और जब मैं एग्जाम देने गया था इस्लामाबाद के अंदर, तो पूरे इस्लामाबाद का कंप्यूटर का एग्जाम एक ही सेंटर में था और उसमें सिर्फ 100 बच्चे थे पूरे इस्लामाबाद से, राइट। सो ऑप्शंस नहीं थी उस वक्त हमारे पास जब हम पढ़ रहे थे, तो ऑप्शंस बहुत गिनी चुनी थी। आज आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, राइट। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग है, यूएक्स डिजाइन है, सीएक्स इंजीनियरिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, प्रोग्रामिंग है, एआई है, रोबोटिक्स है। देयर सो मेनी थिंग्स विद इन द कंप्यूटर। फिर वो नहीं है, फिर अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल के अंदर है तो फिर बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी दीस डेज। सो फिर तो क्वेश्चन ये है, आर्ट्स एंड साइंसेज है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इज एन एजुकेशन इटसेल्फ। You have no idea how many students I meet that come from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, इस बात से जो they come overseas to study sports management, to study physiotherapy for athletes, right? Because एक physiotherapy आपकी separate होती है और फिर जो athletes की जो physio होती है वो different होती है। तो sports के अंदर एक पूरी डिग्री होती है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है स्पोर्ट्स के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। वंस यू आइडेंटिफाई कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, देन यू लुक फॉर कि अच्छा कौन सी कंट्री इज बेस्ट, व्हाट आर माय ऑप्शंस टू स्टडी दोज, राइट। जैसे अगर मुझे डेंटिस्ट्री करना है, so for example डेंटिस्ट्री के लिए I know for a fact that New Zealand is really popular, even students from US, Canada, Australia, everybody goes New Zealand, Dunedin, to study dentistry, right? So then you need to identify कि कौन सी country is better for that part of education. So you need to list down. Now एक दो तीन नहीं, you need to make list, 10 list minimum. उसकी वजह ये है because हर country के कुछ pros and cons होंगे. There will be financial liabilities, there will be legalities, there will be challenges on ground, there will be language barriers, there will be cultural barriers. So all of these countries have pros and cons. So then you list down कि अच्छा भाई अगर मैं ये सपोज न्यूजीलैंड जाना है, यूएस जाना है, इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है, जर्मनी जाना है, तो फिर मैं यहाँ पे इनके बेटर क्या है और कॉन्स क्या है, एंड देन यू डिसाइड अच्छा मुझे कहाँ पढ़ने जाना है। सो इट्स लाइक डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च। दैट्स नंबर वन। सो बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू स्टडी, देन यू आइडेंटिफाई द कंट्री कि मुझे किस कंट्री पे जाके पढ़ना चाहिए, बिकॉज everybody's background is different, right? So I am no one to suggest कि आप इस country में जाके पढ़ लो, but इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 country minimum identify कर लो, पढ़ सकते। So that's how I normally go about. I think that's a fair answer. Matlab, the key is not to choose a country, but choose a career where your interest और जाहिर सी बात है कि आपने एक certain फील्ड में पढ़ा हुआ भी तो है, लाइक ओ लेवल्स किसी फील्ड में किया होगा, किसी ने साइंस में, किसी ने बिजनेस स्टडीज में, किसी ने, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करें। चूज अ करियर, चूज अ डिग्री, कोर्स, व्हाटएवर, एंड देन यू सी
what are the best universities available. और अब मेरा ये ख्याल है अकबर, जो मेरी भी research है कि you're not just talking about Australia, New Zealand, Canada, US. There, like you're in Thailand, there is Malaysia. There's so many other countries which have opened up for international education. So I think you're right. We should choose a career and choose our interest rather than getting stuck with the country. Acha, दूसरा, yes, absolutely, that's correct, right? So और फिर क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, अगर मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर मेरे आगे ऑप्शंस क्या हैं? बिकॉज जब आप कोई भी कंट्री, okay, I'm getting a comment saying my voice is not audible. Just want to make sure, am I audible? If you guys can just type in the chat how many people can clearly hear, because there was a little, there's a little network glitch after every few minutes. So I think most of the people can, hear you. I think please go ahead. Great. Right. So absolutely choose a career, right? और दूसरा ये मैं ये बोलना चाह रहा था कि don't shy away to switch your career. I can give you my example, right? I'm not saying be like me, please don't. But I'm just letting you know कि मैं किस route से होते हुए पहुंचा हूँ यहाँ. मौला का बहुत शुक्र है और दुआएं parents की. I did my inter, metric, FSC, and then I did my O levels and A levels. So मैंने दोनों stream of education I went through, right? So I went through the government scheme, which is metric and FSC, and then I also went through O levels and A levels. But also while I was studying, मैं bachelor's कर रहा था, or I was studying as being a computer engineer, मैंने halfway switch कर दिया and became into management science. So I did my degree in technology management. Then I started working as a HR consultant. So graduated as technology management, started working as HR consultant, learning and development. वहां से फिर मैंने switch किया वापस into technology, फिर recruitment. So throughout my careers, I've switched. I mean, throughout my working lifespan, I've switched careers as well. Or don't shy away from this. उसकी वजह ये है, I mean, इमाम भी कहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में, एक इंसान की जिंदगी में, probably I think 6 or 7 times you will switch your careers, right? So it's absolutely all right, right? It's absolutely all right. So don't shy away. Because you see, once you are graduate from a high school, which is your FSC or A levels, and then you go into university, you have a passion to do something. But by the time you graduate from your 4 years, you realize, you know what, this is not who I am, or this is not what I want to do. Then go out and experiment. वो जो आपको सिखाएगा ना, I mean, that experience is great. Nothing else teaches you other than that. What you experience by switching a career, learning new things, experimenting new things. Yes, people will tell you कि भाई ये मत करो, वो मत करो, which is great. सुनो, समझो. But then again, what you are passionate about, go for it, right? Absolutely go for it. So again, don't be shy of switching your career or experimenting. But yes, ये नहीं है कि throughout I don't want to tell my age, but anyway, I've passed 40 long ago. But ये नहीं कि मैं 40 साल तक जो हूँ वो experiment ही कर रहा हूँ. Then it's a different story altogether, right? So experiment, yes. Be brave and open for learning. Be open. There's a difference between being, experimenting in the earlier years and being inconsistent, for 20 years. Correct. So I think that message is clear. So Akbar, continuing that conversation, please share us with your story in terms of when you started off, and I know it was a long time back. World has changed now, especially after the pandemic. I think it's post-pandemic world. A lot of children probably also have an option for studying online from those same universities on much lower costs. ठीक है ना? तो comparing that, from your times to the recent times where online education का भी option है, and then if you really do choose, if you need to study abroad, what were the challenges you faced in those times, and अब हम क्या common और top challenges क्या होंगे students को? आपने एक सवाल के अंदर 3 different सवाल पूछ लिए. So जी बिल्कुल. Giving you more screen time. Let me go one by one. Okay, so my career path, how it started was
Okay, so I moved abroad. I mean, I went to Australia for the first time, was on a scholarship. It was for a 3-month program, which was for young professionals. It was called Leadership Program. It was the Leadership Program, residential for 3 months, and I got a scholarship. I didn't get the scholarship from institution, by the way, because it was a 3-month program. I got a scholarship from the body that was running that program themselves. So they offered me they offered me boarding and lodging and the fee. Travel, I had to obviously pay on my own, which was traveling from Islamabad all the way to Sydney. So I did that course, then I came back to Islamabad, and then I went back to Australia on a different visa. And then I was working full time. So during my stay in Australia, I was part of National Council with ANZ. So I was, for 3 years, I was national member for settlement team. And 2 years, I was leading the whole ANZ and settlement portfolio for Australia, New Zealand, and Papua New Guinea, the jurisdiction that we have, which is the ANZ, right? Usme, our purpose was that जितने भी international migrants होते हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड आते हैं, किसी भी part of the world से आते हैं, so we are the first point of contact, right? चाहे वो पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो जॉब पे आ रहे हैं, या चाहे वो डायरेक्ट पीआर लेके आ रहे हैं, या whatever purpose से वो आ रहे हैं, we are the first point of contact, and our responsibility is to make sure that we provide them all the make their जो challenges हैं उनको आगाह करें, law से आगाह करें, legality से आगाह करें, उनके options क्या हैं, उनके rights क्या हैं, as an international student, as an international migrant, as being on a job visa, whatever. So we are updated, we updated ourselves with the laws and stuff. So we keep them updated on that part. But majority जो आते थे Australia and New Zealand were international students. And these international students were from India and Pakistan. Sri Lanka, Bangladesh, but more were India and Pakistan से हमारे पास international students आते थे, primarily undergraduate. Postgraduate, masters के लिए बहुत कम थे, but mostly undergraduate के लिए. So उसमें obviously I had the opportunity to interact with all of these students जो different universities में जा रहे थे across Australia and New Zealand. And then also because I was part of National Council, so we were interacting with Canadian National Council because Canada में settlement team बहुत पहले बनी थी on the guidance of Honorable Imam, because the international settlements migration started in Canada long ago, right? So वहाँ की जो settlement team थी वो बहुत पहले बन गई थी, so we were constant touch and learning from them how they started with the process. So then we were also learning, students वहाँ जाते हैं programs, and then we would share कि जो वहाँ पे, because ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम्स ऐसे अनाउंस करती हैं, अगर एक सख्त करता है तो दूसरा लीन अप कर देता है, राइट? सो दैट्स हाउ दे वर्क एज वेल एज अ गवर्नमेंट. सो वी वर अवेयर कि फ्लो अच्छा कनाडा का बढ़ गया है, अब कनाडा का कम हो गया तो ऑस्ट्रेलिया का बढ़ गया है, राइट? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. सो वी वर कांस्टेंट इन टच विद द कैनेडियन नेशनल काउंसिल एज वेल. तो उसमें वन थिंग वी लर्नड वाज व्हाट आई सी इज बहुत से बच्चे, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि देखो मैं बड़ा पैदा पाकिस्तान में हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए. बहुत से बच्चे जो पाकिस्तान से आते हैं पढ़ने के लिए, दे कम वाया कंसल्टेंट्स, राइट? अब कंसल्टेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कंसल्टेंसी पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस है, राइट? सो दे tell you to go into a certain program for various reasons. One, because they want to make quick money. उनको आपके करियर से कोई दिलचस्पी नहीं है. Trust me, उनको आपके करियर से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको आपके पैसों से दिलचस्पी है, right? So which is easier for you to get admission? They will tell you आप इसमें चले जाओ, इसमें आपका वीजा भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, right? And then वहां जाके you will settle down. और वहां जाके आपकी हेल्प हो जाएगी or whatever. And that's the worst part. And we have faced a lot of issues when kids touch down in ANZ region, or when the kids touch down in Canada or UK or US for that matter, right? Because wrong guidance ke upar. So first thing first, again, I will go back to my first question, identify what you want to do as a career and then select the country. Don't just listen to every consultant or what consultant is saying. Number one. Number two, मैं ये नहीं कहता कि सारे consultants बुरे होते हैं.
यस दे अच्छे कंसल्टेंट्स भी होते हैं, तो वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं सुनो, बट अपनी रिसर्च भी करो। सिर्फ उनके बेसिस पे डोंट जस्ट हैव अ ब्लाइंड फेथ, आंखें बंद करके एतमाद करना जो है वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप आते हो पढ़ने जा रहे हो, आप यूएस जा रहे हो, आप यूके जा रहे हो, आप जर्मनी जा रहे हो, आप डेनमार्क जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आई थिंक एक चीज मैंने नोटिस की है, हमारे बच्चे जो है वो रिसर्च नहीं करते। कि अगर मैं लेट्स से अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, राइट, अगर मैं जर्मनी में जा रहा हूँ या अगर मैं म्यूनिक उतर रहा हूँ, तो वहां पे क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, मुझे क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ट्रेन सिस्टम कहाँ पर है, बस एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट, गूगल मैप्स पे आप डालें आपको सब मिल जाता है, राइट, accommodations क्या क्या है, accommodations कहाँ पर हैं। So what I learned in that part while serving in ANZ Council, part of settlement team is students आ जाते हैं without knowing, ओह अब क्या करें, right? So वो एक जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। किसके लिए प्रॉब्लम, तो चलो इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारा काम है हेल्प करना, सो एब्सोल्युटली चैलेंज होता है, बट प्रॉब्लम बनता है स्टूडेंट्स के अपने लिए। क्यों? बिकॉज नया शहर है, नया मुल्क है, लॉज अलग हैं, और बेसिक रिसर्च नहीं की थी, तो वो पैनिक में चले जाते हैं, और उस पैनिक मोड में क्या होता है कि बहुत से डिसीजंस जो हैं वो गलत ले लेते हैं, क्योंकि प्री प्रिपेयर्ड नहीं थे, राइट, तो वो बहुत जरूरी है। सो बहुत से डिसीजंस जो हैं वो अब्रप्टली फर्स्ट 3 to 6 months आई हैव सीन पीपल टेक रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज वर नॉट अवेयर, बेसिक चीजें। तो वो रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि जब मैं जा रहा हूं तो मुझे लैंग्वेज कौन सी है, अगर मैं यूरोप जा रहा हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ, तो जर्मन कितनी मुझे बोलनी पड़ेगी, राइट, ठीक है इंग्लिश सब बात कर लेते हैं, बट स्टिल, राइट, थिंग्स लाइक दैट। अगर मैं जैसे थाईलैंड में बैठा हूँ आज, तो यस इंग्लिश में काम हो जाता है, पर अगर डेली लाइफ में नोबडी स्पीक्स इंग्लिश ओवर हियर इन थाईलैंड, राइट, सब थाई में बात करते हैं। पर अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में आ रहा हूँ, स्टडी करने आ रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ थाईलैंड के अंदर, यस everybody speaks English in university, right? So those are certain things one needs to do a little bit research about. So दूसरा आपने सवाल मुझसे पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन और एक्चुअली ऑन साइट एजुकेशन के बारे में, दो चीजें हैं। अगर आप देखें ऑनलाइन एजुकेशन एब्सोल्युटली अवेलेबल है, ऑल योर बिग यूनिवर्सिटीज आर नॉट प्रोवाइडिंग योर ऑनलाइन डिग्रीज। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है? डिसिप्लिन के ऊपर। मुझ जैसा बंदा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, and I'll be honest, I'm not an online person. Why? Because 2 घंटे 3 घंटे लगाना हफ्ते में, लाइक 3 दिन बैठ के पढ़ना या वो सुनना लेक्चर, I think I can't do it. I need to be in an environment, I need to be in a classroom where I have no option but to be part of that class. जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या होता है, मैं ऑनलाइन तो पढ़ रहा हूँ, या मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा है, या मेरा फेसबुक भी चल रहा है, right? All those things, and then I can't focus. So absolutely online is a good option, but then discipline is a must and mandatory. You cannot say कि मैं अगर discipline नहीं हूँ तो मैं online पढ़ लूंगा। वो एक सबसे बड़ा issue आता है online पढ़ने में। So yes, online is an option. दूसरा online का मसला ये है, I mean मसला नहीं है, but challenge ये है, when you go online, please research and verify कि जहां से आप ऑनलाइन इनरोल हो रहे हैं वो जेन्युइन और लेजिट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। देयर आर thousands of scams that happens every day, जिसमें वो पैसे ले लेते हैं, आपको कहते हैं आप इनरोल हो गए हैं, पर वो लेजिट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स नहीं होती हैं, राइट? सो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज वेरीफाई। And the easiest way, right? Go to AKEPB, local board के पास चले जाओ, बताओ भाई ये ऑनलाइन है, can you help me to verify? I'm sure there will be people out there to help you verify कि अगर आप ये ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो ये legit है या नहीं legit है, right? So that's the other challenge. So I think, Sorry. yeah, I think so. There's an opportunity here. Studying abroad is not just about getting admission into a university and going and studying. It's a complete change of lifestyles, especially people, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, जो पूरा अपना एक कल्चर शिफ्ट करके आए होते हैं, और जाहिर सी बात है कि लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, डाइवर्स कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करना, एक ऐसी सोसाइटी में रहना जो कि आपसे अलग है, और
डॉम में रहना या जो बोर्डिंग हाउस है उसमें रहना, इट्स अ होल एक्सपीरियंस व्हिच एड्स टू योर स्टडिंग अब्रॉड. इट्स नॉट जस्ट taking the courses. I think that's a very good opportunity. और आपने ये भी बात की जो लैंग्वेज की, तो आई थिंक एक मिथ शायद ये है, और यू कैन टेल अस मोर कि क्या मुझे उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, कितनी परसेंटेज आनी चाहिए इफ आई वांट टू स्टडी लेट्स से इन जर्मनी. राइट. सो आई थिंक बिफोर मैं उस पे आऊँ, आई थिंक एक बात इमरान आपने बहुत अच्छी टच की. To study abroad, one must be prepared for culture shock. अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम आते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले और पहली बार दे स्टेप द फुट आउटसाइड पाकिस्तान और सीधा पढ़ने आ जाते हैं, राइट? तो एक कल्चर शॉक मिलता है. सो वो आई थिंक व्हाट आई वांट इज एवरीवन टू बी अवेयर. और पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो प्लीज घबराने की बात नहीं है इसमें, बट इसमें ये कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. What you will see, maybe you will have not come across in Pakistan for both boys and girls. मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ very quickly. First 3 years when I moved to Australia, it was not easy, and I'll be honest, it was definitely not easy. मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था. I was working with one of the top consultancy firm, and I was working on my clients that I was working with was Unilever, Shell Gas, Shell Petroleum, British Petroleum, British American Tobacco, Deutsche Bank, all these, I was working with them as a consultant. See, वो सब छोड़ के मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया. Now imagine, मैं पाकिस्तान में ऑनेस्टली मैं उस वक्त कहता हूँ आज से 16-17 साल पहले अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था. ठीक है ना? आई कैन टेल यू, आई मीन पीपल नो मी इन नूराबाद. आई यूज्ड टू लिव इन नूराबाद. 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, अकेला रहता हूँ, गाड़ी रखी हुई अच्छी सी, राइट? और क्या चाहिए, राइट? ट्रैवल कर रहा हूँ, आई मीन क्लाइंट्स के खर्चे पे मुझे वो भेज रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा हूँ. आई रिमेंबर जब ऑलपर्स लॉन्च हुआ था, आई वाज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट एक्सरसाइज विद एंग्रो फूड्स, राइट? जब बिफोर ऑलपर्स वाज लॉन्च. सो ये सब छोड़ के मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया. अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि मैं एक अपार्टमेंट में रह रहा हूँ. 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है, लेकिन उस 4 बेडरूम में मेरे पास सिर्फ एक कमरा है. उस एक कमरे में एक सिंगल बेड है, छोटा सा कमरा है. हर कमरे में अलग अलग लोग रहते हैं. एक कमरे में एक नेदरलैंड से लड़का रह रहा था, एक कमरे में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रह रहा था उसकी वाइफ के साथ, एक कमरे में एक लड़की रह रही थी, और एक कमरे में मैं था, राइट? और जिस कमरे में मैं था उसमें कभी कभी हम ये करते थे कि शिफ्ट भी लगती थी. ना व्हेन आई से शिफ्ट, मतलब सुबह अगर मैं काम पे चला गया हूं तो मेरे बेड पे कोई और सो रहा है, और जब मैं आया हूं वापस तो वो शाम को काम पे जा रहा है तो मैं सो रहा हूं, राइट? तो ऐसा ऐसा भी होता है, राइट? सो what I'm trying to tell is कि you need to adapt. Why? Because so when I moved, obviously I didn't have money in my pocket. और आई थिंक बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से आते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे पेरेंट्स एंड आई फील फॉर देम एंड आई फील फॉर पेरेंट्स कि आप इतना बड़ा लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं टू सेंड योर किड्स अब्रॉड. उससे 2 चीजें हो जाती है. एक तो ये होता है कि जो बच्चा वहां पढ़ने आ रहा है, जो किड्स वहां पढ़ने आ रहा है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने पैसे लिए हैं, राइट? पैसे लेके, लोन लेके, जो स्टेटमेंट्स दिखाई थी या व्हाटएवर, मुझे भेज दिया है पढ़ने के लिए, या मेरी सेमेस्टर की फीस भर दी है पहले साल की, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स की, एंड आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम समवेयर, राइट? सो दे नीड टू पे बैक. जो स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहा है उसका फोकस फिर वो हट गया है पढ़ाई से, बिकॉज क्यों? उसको ये फोकस है कि मुझे कमाना भी है और मुझे पैसे घर भेजने हैं, और फिर मुझे पैसे इतने भी कमाने हैं कि मुझे ट्यूशन की फी भी निकालनी है बाद वाले, मैं बचाऊं भी. सो वो जो pressure है, sometimes students are not able to take, and a lot of students I have dealt with, they go in depression early ages, right? I mean 22-23 साल के लड़के लड़कियां डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज इतना बड़ा प्रेशर होता है उनके ऊपर. So what I'm trying to get at is कि these are certain challenges that you face when you go abroad, right? आप जब आते हैं पढ़ने के लिए, जरूरी नहीं है आपको नौकरी मिल जाए फॉरेन से. Sometimes you don't. सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आज सब बैठे हुए हैं यहाँ पे. I traveled to Pakistan a couple of years ago before COVID में आया था. So I see कि हमारे पास बहुत से लोग चाइना से आ रहे हैं, let's say, right? In Pakistan right now, I see things have changed. Science, I see in Mandarin language now.
अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि अगर आप कोई जो आपके पास एक आपका स्टोर है, आपके पास एक लड़का चाइनीज बंदा आता है, वो कहता है कि यार मैं मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है चाइना का, पर मैं उर्दू में बात नहीं कर सकता, क्या आप उसको नौकरी पर रखेंगे अपने पास? उसके पास चाइना का एक्सपीरियंस है पिछले 5-7 साल का, वही जो आपको चाहिए, क्या आप रखेंगे उसको? उसको टूटी फूटी उर्दू बोलता है, पर वो चाइनीज में बात करता है, क्या आप रखेंगे उसको अपने पास? नहीं रख सकते ना, क्योंकि आप यू कांट टेक दैट रिस्क. So imagine yourself as the same person who is going to a new country. You're not from there. You don't speak their language. So it gets really difficult initially to get the job. Right? It's a simple mechanism. It's not about कि कोई biased है या racist है. I hear these comments every day, day in out. Right? कि यार लोग racist है या biased है. ऐसा नहीं है. It's a simple psychology. Right? अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्यों expect करते हैं कि कोई और करेगा हमारे लिए? It's a simple thing. So it takes time to get a job first time. So वो challenge होता है. So be prepared for that. दूसरा, legal, हर country doesn't allow you to work as a student, international student. So that's what I'm saying. Research is जरूरी है. अगर आप international student visa पे आ रहे हैं, please understand कि conditions क्या हैं उस visa की. जब आपको वीजा मिलता है तो उस वीजा पे आपको कंडीशंस दी जाती हैं कि आप वहां पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, काम कर सकते हैं तो कितने घंटे काम कर सकते हैं. Right? So for example, मलेशिया में बहुत अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं. मोनाश यूनिवर्सिटी, which is one of the top 10 universities from Australia, actually उनका कैंपस है मलेशिया के अंदर. So बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया पाकिस्तान से मलेशिया आते हैं पढ़ने के लिए मोनाश यूनिवर्सिटी के अंदर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में फीस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो वो मलेशिया में सब्सिडाइज हो जाती है. बट मलेशिया में ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप काम नहीं कर सकते. यू कैन ओनली वर्क ऑन कैंपस. You can't work outside campus, right? So these are the things that you need to be aware. और अगर आप लैंड करते हैं, आप कहें कि ओह अब मुझे तो ऑन कैंपस जॉब नहीं मिल रही, बाहर मैं काम नहीं कर सकता. Now what? Right? What's the backup plan? Right? So these are certain things which I want to highlight कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हो बाहर, तो ये लॉज, लीगैलिटी प्लीज स्टडी कर लो, पढ़ लो, कंसल्टेंट से पूछ लो, और वरना आगा खान एजुकेशन बोर्ड को, लोकल को रीच आउट करो कि भाई मैं ये जा रहा हूँ, मेरा एडमिशन हो गया है, आई वांट टू अप्लाई फॉर द वीजा या व्हाटएवर, कैन यू हेल्प मी आउट, कैन यू टेल मी कि वहाँ पे लीगल क्या है, challenges क्या हैं, and I'm sure education board will help you out and let you know whatever they know, or they may try to connect with someone they know who is in that part of the world. Right? So वो ये चीजें हैं जो challenges होते हैं जब आप पढ़ने आते हैं overseas. So your financial challenges, पढ़ाई का challenge, job का challenge, language barrier, yes. आपने जर्मनी की बात की, मैंने थाईलैंड की बात की. Yes, sometimes those languages does become a barrier because आपकी everyday जो communication है वो hinder हो जाती है, वो impact कर जाती है. आप everyday, अगर मैं आज जाके बाहर बात करता हूँ, I mean I've been living here for a year and a half, तो मैं टूटी फूटी थाई बोल लेता हूँ, तो मुझे काउंटिंग आ गई है, मैं रास्ता पूछ सकता हूँ, मैं खाने का पूछ सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ वॉशरूम किधर है. बट पहले 6 महीने मैं बात नहीं कर सकता था थाई के अंदर, जब मुझे यहाँ पे भेजा मेरे ऑफिस में. इट वाज रियली टफ फॉर मी, इवन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. इट वाज टफ, इट वाज नॉट इजी, राइट? इट टुक सम टाइम, बट अगेन यू नीड टू बी पेशेंट. Never say no to learning. That's one motto that I have. Never say no to learning. क्योंकि अगर आप learning से भागेंगे, then it becomes difficult for you to grow as a person. आप education तो ले लेंगे, आप तालीम तो ले लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, बुक्स के अंदर, और जो बाकी learning है, awareness है, वो नहीं आएगी, आपकी personality grow नहीं होगी. Right? So that's where learning जो every day से मिलती है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, that is very important. So never say no to learning. और भागना नहीं है challenges से, डरना नहीं है challenges से. Right? So when you come overseas, be brave, be strong, and reach out for help when needed. Don't keep it to yourself. Please reach out for help. I think हमारे यहाँ, हम जिस सोसाइटी में बड़े होते हैं ना, I think एक टैबू बन गया है कि हेल्प नहीं मांगनी है. राइट? कोई क्या कहेगा या कोई क्या बोलेगा. इवन इंस्टीट्यूशंस के पास, we sometimes find out very last minute, oh मैं आपके पास इसलिए नहीं आया बिकॉज कोई क्या कहेगा.
अगर मेरे बारे में किसी को मालूम पड़ गया तो मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड से मैं हेल्प मांग रहा हूँ, या मैं फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा हूँ सोशल वेलफेयर बोर्ड से, या मैं एजुकेशन बोर्ड ओवरसीज जहाँ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उनके पास आया हूँ, या नेशनल काउंसिल के पास आया हूँ, इट्स ओके। इंस्टीट्यूशंस आर मेड टू हेल्प यू। सो अगर वो आप हेल्प नहीं मांगेंगे तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपकी हेल्प करनी है, पहली बात। दूसरी बात, हर किसी की हेल्प उस तरीके से जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं हो सकती फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी एज वेल। There are a lot of challenges that happens within institutions. There are a lot of challenges that happens in that society. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अगर आप कोई पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेशनल काउंसिल है, बहुत बड़ा सेटअप है एजुकेशन बोर्ड का, हेल्थ बोर्ड का, सोशल वेलफेयर बोर्ड का, राइट? आप फार ईस्ट आ जाएं, सिंगापुर आ जाएं, यू विल नॉट फाइंड देम, नॉट एट ऑल, राइट? क्यों? बिकॉज जरूरत नहीं है लोकल यहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इतना बड़ा सेटअप नहीं है, जमात बहुत छोटी है, राइट? आप ANZ चले जाएं, अगेन अ डिफरेंट सेटअप। यस, आप यूके चले जाएं, जमात बड़ी है, डिफरेंट सेटअप। कनाडा, US, डिफरेंट सेटअप, राइट? यूरोप चले जाएं, आउटसाइड यूके, वेरी डिफरेंट सेटअप, राइट? सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान में और मैंने आई थिंक इमरान को आई थिंक कल परसों कहा था कि व्हाट आई हैव लर्नड इज के हम स्पून फीड कर देते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में लोगों को स्पून फीड करता है कि आपके कुछ दे रहे इंफॉर्मेशन पहले से प्रोएक्टिवली, विच इज गुड, बट एक्चुअली वो हमारी आदत बिगाड़ भी देता है। तो जब हम आते हैं ओवरसीज तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस भी हमारी वैसी ही हेल्प करेंगे जैसे पाकिस्तान में हेल्प होती थी। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। So be prepared for that. It's not that the institution help नहीं करना चाहता. There are a lot of other challenges that institutions को face होते हैं, which they can't do. They want to help, they may help, but they may not help the way you are expecting. So I just want to tell everyone, be prepared for that. So yeah, I think you rightly covered. I think सबसे जो important आपने planning की बात की, उसमें I think for Pakistani, especially in these today's scenario, because we are all suffering through a lot of economical and financial crisis. सबसे important financial planning होती है, and then जिस तरह के हमारे पास कुछ एक सवाल भी आए कि यूनिवर्सिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, राइट? सो लेट्स से अगर आपने स्टडी स्टार्ट कर भी दी एज अ स्टूडेंट, बट आपका एंड गेम ये था कि आपने वहां पर सेटल होना है, एंड यू बेसिकली जस्ट पेड फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड नाउ यू हैव टू अर्न। तो क्या रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के फॉर वर्किंग, अर्निंग मोर मनी? एंड नाउ एक सवाल से मैं इसको लिंक करूंगा, एंड यू कैन आंसर बोथ दोस क्वेश्चंस के एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज किसी भी कंट्री में अब आप स्टे कर रहे हैं, आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन लोगों के लिए, यू कैन गेट मनी इन, सो क्या फ्रीलांसर काम कर सकते हैं? क्या वो रूल्स पे अप्लाई होते हैं चाहे आप दुनिया में कहीं भी पढ़ रहे हो? Absolutely. So I think good news is कि आज I mean thanks or no thanks to COVID, but anyway thanks to COVID I would say a lot of countries have opened up different visa programs. What they call is digital nomad, right? So for example आपको आप सर्च करेंगे डिजिटल नोमैड वीजा, आपको बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएंगी, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, UAE, right? What is a digital nomad visa? Digital nomad visa actually ये है कि आप वहां पढ़ सकते हैं और आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, आप अर्न कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन आपने फ्रीलांस की बात की, राइट? अगर आप गुड है, अगर लेट्स से आप अच्छे हैं अकाउंटिंग के अंदर, पाकिस्तान में आई थिंक वी फॉलो यूके अकाउंटिंग, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद है यही पढ़ा था हमने, राइट? हम यूके का लॉ फॉलो करते हैं प्रीटी मच बुक्स कीपिंग के अंदर। तो अगर आप गुड हैं, उसके अच्छे हैं, आपने वो अंडर ग्रेजुएट पढ़ा है या आपने FSC में हाई स्कूल में अकाउंटिंग पढ़ी है, तो आप फ्रीलांस पार्ट टाइम SME में ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट? बहुत सी जॉब्स आती हैं ऑनलाइन फ्रीलांस वेबसाइट्स के ऊपर जिसमें वो हायर करते हैं ऑन आवरली बेसिस, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, यस यू कैन डू दैट बिकॉज दोज वीजाज नाउ अलाउ यू टू डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं, right? So student visa pay, yes, I think that's why I said there are certain restrictions, not by the university sometimes, but actually by the visa, by the government. So what does that mean? So for example, मैं Canada जा रहा हूँ पढ़ने के लिए as an undergraduate. Now you need to understand
the visa restrictions are also based on what program you are enrolled in and what visa you have got. मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अंडर ग्रेजुएट पढ़ने जा रहा हूँ मैनेजमेंट साइंसेज, मेरा वीजा का सब क्लास कुछ भी हो सकता है. और अगर मैं अंडर ग्रेजुएट पढ़ने जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी बाय रिसर्च, लेट्स से, राइट, इट्स एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बट बाय रिसर्च, तो मेरा वीजा का सब क्लास कुछ और होगा. अगर दो लोग जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट पे, पर दोनों के प्रोग्राम्स अलग अलग है, दोनों कनाडा जा रहे हैं, दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पर दोनों का वीजा का सब क्लास डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं. एक का अंडर ग्रेजुएट बाय स्टडी है, एक का अंडर ग्रेजुएट बाय रिसर्च है. तो उस बेसिस पे आपके ऑल्सो वर्किंग कंडीशंस भी अप्लाई होंगे. किसी को जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ने जा रहा है, they can only work 20 hours or 40 hours every fortnight, और जो बाय रिसर्च है शायद उस पर लिमिटेशन ना हो, he can work more than 40 hours, more than whatever, it depends. So वो जरूरी है, and then it's important to follow. उसकी वजह ये है, and I without naming someone, I'll just give an example. Students come आते हैं because purpose, as I said, right, it's important to identify कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ या मैं settle होने जा रहा हूँ. So I have seen many students, medical nursing अच्छी colleges universities of पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं ऑस्ट्रेलिया, मैनेजमेंट साइंसेस, अकाउंटिंग. क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग में उस वक्त 5 साल पहले वहां पे शॉर्टेज थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकाउंटिंग की शॉर्टेज थी, तो वो लिस्ट एक कैटेगरी बनी हुई थी, उसमें अकाउंटेंट्स की जरूरत थी. अगर आप वहां से पढ़ के निकलते हैं, so then the government, it was easy for you to get a PR or a work visa after you graduate from your bachelor's in accounting from Australia. But imagine आप नर्सिंग की स्टूडेंट थे इन पाकिस्तान, आपने कोई कनेक्शन नहीं है आपका अकाउंटिंग के साथ, और आप अकाउंटिंग पढ़ने आ जाते हो, और फिर जो चैलेंजेस, जो स्ट्रगल होते हैं वो अलग, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको जॉब भी करनी है. तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपको जॉब करनी है और आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं, आपने ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो लो फी है, व्हाटएवर है, और फिर आप पढ़ने जाते नहीं हो, अपने क्लासमेट को कहते हो कि मेरी अटेंडेंस लगा देना, सो दैट आपकी अटेंडेंस लगती है, आप काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स जो आपको अलाउ नहीं है. नाउ इमेजिन, गॉड फॉरबिड, if you get caught, what happens? If you get caught, you will be deported immediately. Now, every country has different laws. Some countries may deport you. Some countries may even put you behind the bars, right? Now, if that situation happens, that you are put behind the bars, I don't think national institutions are able to help sometimes, because आपने एक law तोड़ा है, जो एक legit law है, right? उस पे even institutions को help करना मुश्किल हो जाता है. और अगर आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको डिपोर्ट करते हैं, तो इमेजिन क्या हुआ है, आपके नाम के ऊपर एक स्टैंप लग गया है, फिर आप कहीं भी जाएंगे बाहर, ना सिर्फ पढ़ने के लिए, इवन ट्रैवल के लिए, इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू, जस्ट इवन टू अ ट्रैवल. बिकॉज होता ये है कि जो डेटाबेस है, इंटरनेशनल डेटाबेस जो है, जब आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ID कार्ड, ये सब लिंक्ड है, जब आप अप्लाई करते हैं तो अब किसी भी वीजा फॉर्म में टूरिस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, सिंपल पूछते हैं, हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, हैव यू एवर बीन एक्साइल्ड इन लास्ट 5 years 10 years? इफ यू से नो, तो पहले तो आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर किया गया है तो आप फंस गए, राइट? सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क, राइट? सो एब्सोल्युटली वो लॉज जरूरी हैं. तो वो आपकी जो वीजा आपको मिलेगी, ये सब क्लास, उसके ऊपर लिखा होगा कंडीशंस क्या क्या है, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने घंटे काम नहीं कर सकते हैं, right? तो वो जानना बहुत जरूरी है. So yes, there are those conditions. Some countries allow you to work full time. Some countries allow you to work only part time. Some countries allow you to only work some hours while you are studying. So it varies. Imran, you are on mute. Thanks, Akbar. Yeah, I think you're absolutely right. जरूरी चीज ये है कि आपका अगर स्टडी के आप नजरिए से जा रहे हैं, तो you should have the enough finances, let's say, to finance your education, और फिर focus उस पे करें. But I think what's happening from Pakistan more and more is कि लोग
की जो नजरिया है कि नहीं हमें बस वहां से मूव, और बल्कि ज्यादातर तो कंसल्टेंट्स ये कहते हैं कि सर एजुकेशन के लिए हम बताते हैं इनको कि आप एजुकेशन के बहाने चले जाएं, और पाकिस्तान से निकलना एक बहाना होता है, ना कि कहीं मूव होना। क्योंकि कुछ बच्चे जो अगर ये सवाल पूछ रहे हैं चैट पे भी कि विच कंट्री इज बेस्ट, तो उसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं कि यू शुड नो व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाट यू वांट टू डू रादर देन चूज अ कंट्री। क्योंकि अब कंट्रीज के हवाले से चूंकि एजुकेशन अगेन हैज बिकम सच अ, अब सिर्फ वेस्ट नहीं रहा, बल्कि जिस तरह से आप थाईलैंड में हैं, मलेशिया में, आई एम श्योर यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आते होंगे, मलेशिया में भी आते होंगे, सिंगापुर में भी आते होंगे, और यूएई में भी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सो it's more important what you want to do and not the country. Second सवाल ये एक आया कि what is the most important thing, आपने इसका आई थिंक पहले ही जवाब दे चुका है कि most important thing is planning, financial planning, legal planning and technical planning and your research. जितना आप उन लोगों से बात करेंगे जो ऑलरेडी वहां पर हैं उस कंट्रीज में, आज की दुनिया में आपको चाहे काउंसिल का कांटेक्ट चाहिए हो, चाहे अकबर का चाहिए हो, चाहे आपको किसी भी स्टूडेंट का चाहिए जो ऑलरेडी इस कंट्री में है, वहाँ की कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, लिंक्डइन ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स है, यू कैन डू सो मच ऑफ रिसर्च प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू डू इट। बिकॉज लोग थोड़े से अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि भाई हमारे पास और भी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आई थिंक कुछ और सवाल भी हैं कि क्या अंडर ग्रेजुएट्स पढ़ सकते हैं यूएसए में जाकर, क्या पार्ट टाइम पढ़ाई हो सकती है? Okay, so international students cannot study part time. That's a given across the board, right? क्योंकि आप international student है, आप student visa पे आ रहे हैं, आपका purpose study है, right? So you can't study part time. अगर आप work visa पे आ रहे हैं, then yes, I mean absolutely you can work full time and study part time, absolutely. But if you are traveling on a student visa, then yes, I'm afraid you can't really study part time. दूसरा रिसर्च करना जरूरी ये है कि आपने बहुत सी बात की मन फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज यूजुअली व्हाट आई सीन इज के फर्स्ट ईयर बहुत सी कंट्रीज में आपको फीस दिखानी होती है, अपफ्रंट सेमेस्टर की फीस अपफ्रंट एक्चुअली भरनी होती है टू गेट अ वीजा, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना वो सिर्फ 4 महीने का होता है, और 4 महीने पलक झपकते निकल जाते हैं। and I'm not kidding, 4 महीने लगता है कि बहुत ज्यादा है, एक्चुअली नहीं है। जब आप किसी नए शहर में, नए मुल्क में होते हैं, तो वो 4 महीने लिटरली पलक झपकते निकल जाते हैं। और उस 4 महीने में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, बट it's a challenge and it gets difficult to get a job in first 4 months. So बैकअप ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो प्लान करना बहुत जरूरी है when you land in an unknown country or an offshore country जहां आप जा रहे हैं। So वो बैकअप प्लान बी होना बहुत जरूरी है, और वो फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी है, कि अगर मैं वहां पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, अगेन एज इमरान आपने कहा कि आजकल बहुत से पोर्टल्स अवेलेबल हैं, बहुत से वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत से ब्लॉग्स अवेलेबल हैं जो आपको बता देते हैं कि इस शहर में अगर आप रहते हैं, अपार्टमेंट शेयर करते हैं या रूम शेयरिंग में रहते हैं, तो कॉस्ट क्या आती है उस लोकल करेंसी के अंदर, पर डे, पर वीक, पर मंथ। यू कैन फाइंड इट इजीली राइट नाउ, एंड देन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू योर पाकिस्तान रुपी। और फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा यार, यहाँ पे मेरी स्टूडेंट फी जो है वो XYZ है, मेरा रहने का खर्चा इतना है, और मेरा खाने का खर्चा इतना है, तो वो टोटल खर्चा प्लस ट्रांसपोर्टेशन, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, बस से करेंगे, ट्रेन से करेंगे, लोकल, तो वो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। सो वो टोटल खर्चा कितना बनता है मेरा 1 साल का, वो 1 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट 1 सेमेस्टर, इट्स फर्स्ट ईयर, बिकॉज दैट फर्स्ट ईयर इज क्रिटिकल। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू प्रॉब्ली आर ऑन अ 4-year प्रोग्राम, तो वो फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, एंड ये फर्स्ट ईयर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जब आप लैंड करते हैं किसी भी कंट्री में, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं, होल ईयर, राइट? एंड देन यस, दैट होल ईयर गिव्स यू इनफ टाइम कि आप ऑन ग्राउंड तैयारी करें, लोगों को पकड़ें, इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लें, गेट अ जॉब समवेयर पार्ट टाइम, एंड देन यू स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द third semester and then the fourth semester. Yes, that can be done and happens, but फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग होना
ऑप्शंस अवेलेबल होना, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एजुकेशन बहुत जरूरी है। करेक्ट। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हमने, क्योंकि मेरे पास एक सवाल इसमें आया कि व्हिच यूनिवर्सिटी शुड वी चूज, और कैसे हम उसकी रेटिंग को डिटरमिन करें, बिकॉज डिफरेंट वेबसाइट्स पर अब चूंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स भी इतने स्ट्रांग हो गए हैं यूनिवर्सिटीज के, that you would be bombarded once you visit a website or a link on Instagram, on Facebook, you'll be probably bombarded with university brochures and their marketing things. So I think in terms of those universities, अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो इस चीज की अकबर के, किस तरह से कोई हम, जाहिर सी बात है कंट्री की हमने बात कर ली कि यूनिवर्सिटी को किस बेसिस पर सेलेक्ट किया जाए, अगर आपका लेट्स से डिग्री बीडीएस में है, डेंटल सर्जरी साइंसेज में, तो किस तरह से अगर उसको बताएंगे थोड़ा सा। So, okay. So, for example, right? So, you know, there are different websites, there are different organizations that rank universities. Like Times, जो एक international newspaper है, right? वो rank करता है on a yearly basis, which is quite credited. Times करता है, फिर आपके पास दूसरा एक और है, I'm forgetting the name, पोर्टल जो आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है, QS है, QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है क्वालिटी ऑफ स्टडीज की, QS इट्स इंटरनेशनल बॉडी जो रैंकिंग करती है आपकी यूनिवर्सिटीज की। सो वो QS और टाइम्स जो है आर क्वाइट क्रेडिटेड, तो वो आप एब्सोल्युटली देख लें। और QS के अंदर जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब आप आपने कहा कि सॉरी आपने क्या BDMS, आई एम सॉरी आपने क्या कहा? डेंटल सर्जरी, dental surgery, right? So dental surgeon, so absolutely within times के अंदर आपको ranking मिल जाएगी based on your category, management sciences, computer sciences, biology, dentistry, whatever, and same in QS. So these are accredited websites, accredited institutions जो rank करते हैं, और उस पे आप देख सकते हैं कि कौन सी universities जो है किस ranking पर आ रही है और क्यों आ रही है, right? So these are certain portals, and there are many other. I can let the give you the list of 3 or 4 जिस पे हम देखते हैं। I think people who are asking these specific questions, हमारे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस का एक वेबिनार है, वो YouTube पर अवेलेबल है, उसमें you might get information, बट इसमें ऐसी कोई जनरल चीज़ है आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ सम पीपल आस्किंग कि कौन सा प्रोग्राम बेहतर है, मास्टर्स या बैचलर्स, क्या यूके बेटर है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स और अक्सर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग भेड़ चाल जरूर चलते हैं कि आजकल यूके की वीजा मिल रही है, आजकल यूएसए की वीजा मिल रही है, तो चलो वहीं चले चलते हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने दही कहाँ से लेना है, कौन सी दुकान से लेना है। इट्स अ वेरी सो डिफिकल्ट डिसीजन। क्या कहेंगे अकबर इसके बारे में? So see again, back to basics, right? यूके की वीजा मिल रही है, तो मतलब हमने यूके क्यों जाना है? अगेन पढ़ने जाना है या सेटल होने जाना है? पहली बात तो ये, राइट? अगर यूके की वीजा मिल रही है, स्टूडेंट वीजा मिल रही है, लेट्स से कि सेटल होने भी जाना है और हम स्टूडेंट वीजा का बहाना बना के जा रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास आफ्टर आई ग्रेजुएट? मुझे क्या, मेरा वो स्टूडेंट वीजा जॉब वीजा में कन्वर्ट हो सकता है? व्हाट आर द ऑप्शंस, राइट? आई थिंक वो रिसर्च करना जरूरी है कि आज अगर मुझे वीजा मिल जाता है, जैसे मैं यूके चले जाता हूँ या मैं कनाडा चले जाता हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाता हूँ या whatever country you pick, मैं चले जाता हूँ, आफ्टर आई ग्रेजुएट, आफ्टर आई हैव अ डिग्री इन माय हैंड, क्या मुझे उस वहां पे बाद में आफ्टर आई ग्रेजुएट कैन आई वर्क इन दैट कंट्री लीगली? नंबर 1, इफ आई कैन आई कन्वर्ट माय वीजा? बिकॉज स्टूडेंट वीजा पे तो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है ना काम करने की, राइट? तो क्या वो मेरा स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट हो सकता है? अगर मेरा स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट हो सकता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कनाडा में या यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको अगर आपको कन्वर्ट करना है अपना स्टूडेंट वीजा इनटू जॉब वीजा, तो यू नीड अ स्पॉन्सर। योर एम्प्लॉयर नीड्स टू स्पॉन्सर यू, नंबर 1, राइट? सो अगर आपको जॉब मिल जाती है, क्वेश्चन इज योर एम्प्लॉयर रेडी टू स्पॉन्सर? बिकॉज स्पॉन्सर करना आसान नहीं है एम्प्लॉयर के लिए, आजकल बहुत रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोविड। हुआ ये है, there have been layoffs and layoffs are still happening. I mean, I guess if everybody looking at the economy क्या हो रही है हर जगह, Amazon ने layoff कर दिए 6,000 लोग वो globally, Shopify ने layoff कर दिए, Google layoff कर रहा है, Microsoft ने layoff कर दिए, all these big giants are laying off people now, right? So unemployment बढ़ रहा है आपका।
जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि भाई मेरे अपने शहरी जो हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो अगर तुम किसी को बाहर से हायर कर रहे हो तो जस्टिफाई करो मुझे गवर्नमेंट को कि तुम बाहर से क्यों हायर कर रहे हो और मैं इसको क्यों वीजा दूं, क्या हमारे पास लोकल लोगों की कमी है? वो हैव टू जस्टिफाई, एम्प्लॉयर को जस्टिफाई करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। आसान नहीं है। अब आज से 5 साल पहले बिफोर कोविड थिंग्स वर डिफरेंट, कोविड के बाद थिंग्स हैव बीन डिफरेंट। आई एम फॉलोइंग सर्टेन इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस, सो आई एम सीइंग कि थिंग्स आर चेंजिंग। सो वो मुश्किल हो गया है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। उन लोगों को, अपने लोगों, कंट्रीज को, गवर्नमेंट्स को अपने लोगों को सपोर्ट करना है, राइट? सो वो ये रिसर्च करना जरूरी है कि आफ्टर स्टूडेंट, चाहे मैं बैचलर्स पढ़ने जा रहा हूँ या मैं मास्टर्स पढ़ने जा रहा हूँ, क्या मेरा वीजा कन्वर्ट होगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, राइट? सो वो जरूरी है। So I think I'll quickly jump on to some myths here, or I'll request if you can give us very one line answers. Some myths for students, and this brings us towards the more opportunity side. People say that studying abroad is just too expensive and no scholarships are available. Not true. Okay. No, okay, you Not asked me true. one line. Yeah, not true. 2 words. Not true. मतलब ये कि no, it's not expensive. It's Okay, you still see, affordable, and you can find scholarships. So okay, correct, that's fine. That's a good correct. answer. Yeah. So again, you see, expensive is a very relative word. Expensive for you may be not expensive for me. Expensive, I mean, 100 रुपया किसी एक के लिए expensive है, दूसरे के लिए नहीं है. So it's hard to justify कि क्या expensive है, क्या expensive नहीं है, right? So I can't really give that an answer कि studying abroad is expensive or not expensive. Number one, everybody comes from a different background, so it's difficult. But yes, scholarships are available. There are grants available. So एक तो scholarship होती है जो 100% scholarship होती है. फिर ग्रांट्स होती हैं. सो फॉर एग्जांपल AKEF भी आई थिंक ग्रांट्स देता है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपको 50-50 बेसिस पे होता है. आई एम श्योर आगा खान एजुकेशन सर्विसेज भी देता है. बट अगेन क्राइटेरिया है. अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, राइट, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं MBA करने जा रहा हूँ UK, कोई आपको स्कॉलरशिप क्यों देगा? पहली बात, क्यों पाकिस्तान में MBA नहीं होता है? पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, पाकिस्तान में लम्स नहीं है, हमदर्द नहीं है, IBA नहीं है, व्हाटएवर, राइट? तो आपको बाहर से MBA क्यों करना है? So you need to understand कि अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए now applying for a scholarship, I think maybe that could be another program, maybe education board can think into it कि जब आप scholarships के लिए apply करते हैं तो उसका criteria है. I see ads कि I think fellowship US aid की I think scholarship announce हुई है पाकिस्तानी students के लिए recently, right? वो एक जॉब एड तो आ गया है न्यूज़पेपर के अंदर सर्कुलेट, पर उस स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करना है, दैट्स अ टेक्निक, दैट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल. नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट, राइट? इट्स सिंपली लाइक जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और जब मैं रेज्यूमे देता हूँ तो मुझसे ज्यादा काबिल लोग भी हो सकते हैं. अगर मेरी रेज्यूमे पिक करके मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया और किसी और की रेज्यूमे जो ज्यादा काबिल है मेरे से, उसको अगर नहीं कॉल किया तो उसकी वजह यह है कि वो पेपर पे शायद वो काबिल तो है एक्चुअली, पर पेपर पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सका. इट्स एन आर्ट. मुझे अपने आप को बेचना है उस पेपर के ऊपर. जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने आप को बेचते हैं उस इंस्टीट्यूशंस को कि भाई मैं हकदार हूं इस स्कॉलरशिप के लिए बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. वो वर्बली वर्बोज करना, लिखना, इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल. Not everybody, and that's where the problem happens with a lot of students, where they don't get qualified for scholarships because वो एक आर्ट है, राइट? जैसे इंग्लिश, आप IELTS या TOEFL का एग्जाम देते हैं, इंग्लिश हर कोई समझ लेता है, हर कोई बोल लेता है, पर वो एग्जाम में बैठना, अपीयर करना, वो कैसे टिक मार्क करना है, क्या सुनना है, किसको आंसर देना है, इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल, right? How do you get 8 band? How do you, and I'll tell you, right, for last 12 years, 13 years, I've lived in Australia. English is the first language, right? That's a national language. अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन अंडर ग्रेजुएट से पढ़ा हुआ, उसको आप IELTS का एग्जाम के लिए बिठा दें, ट्रस्ट मी, उसका 8 बैंड से ज्यादा नहीं आएगा या 7 बैंड से ज्यादा नहीं आएगा. क्यों? उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको आती है, उसकी तो लैंग्वेज यही है, वो तो पैदा ही यही बोलते हुए हुआ है. फिर उसका IELTS में स्कोर कम क्यों आता है? जबकि अगर एक पाकिस्तान से बच्चा आ रहा है तो हमारा 8 बैंड भी आता है, हमारा 9 बैंड भी आता है, जबकि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, राइट? इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल.
राइट? सो लैंग्वेज इज वन थिंग, एग्जैक्टली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट वो अपीयर करना एक स्किल है। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्टडिंग अब्रॉड इज बेसिकली कॉलेजेस में पार्टी होती है एंड यू कैन जस्ट एंजॉय, तो आई थिंक दैट्स मेजर मुझे मिथ। मुझे पार्टी होती है, बिल्कुल होती है उन कॉलेजेस में, पर उन कॉलेजेस में जाना क्यों है? और जिन आई आई वाज स्टडीइंग माय मास्टर्स प्रोग्राम एट Macquarie यूनिवर्सिटी इन सिडनी। ऑनेस्टली मुझे दिखा दो या पार्टी कहाँ होती है। मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए पढ़ रहा था, तो सारे वीकेंड, Saturday and Sunday, I kid you not, I was in library in the university whole day, no time for any activity whatsoever, because यूनिवर्सिटीज, और मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में और बाहर में फर्क क्या है एनवायरनमेंट का। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज आपको स्पून फिट करती हैं, प्रोफेसर आता है, आपको पढ़ाता है, आप उससे सवाल जवाब पूछते हैं, वो आपको जवाब दे देता है, ऑफ यू गो, राइट? असाइनमेंट्स हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं होता ओवरसीज, एब्सोल्युटली नॉट। प्रोफेसर जब आप एनरोल होते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, जब आप एनरोल होते हैं, आपका अकाउंट बनता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। कोर्स शुरू होने से 2 हफ्ते पहले सारी आउटलाइन, सारे असाइनमेंट्स पहले आ जाएंगे आपके पास, कि क्लास 1 में पहला असाइनमेंट ये है, सेकंड क्लास में असाइनमेंट ये है, थर्ड क्लास में असाइनमेंट ये है। पहली क्लास में आपने क्या पढ़ के जाना है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स 1 हफ्ता पहले अपना लेक्चर अपलोड कर देते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, कि वो क्या पढ़ाएंगे। पूरा लेक्चर 1 घंटे का वो पोर्टल पे आ जाता है, आपको वो सुन के जाना है क्लास के अंदर, वो पढ़ के जाना है। जब आप सुनते हैं तो आप सवाल लिखते हैं, अच्छा ये, क्योंकि वो तो मोनोलॉग है, राइट? प्रोफेसर बात कर रहा है, देयर आर नो क्वेश्चन, इट्स अ मोनोलॉग, सो देन यू राइट डाउन द क्वेश्चंस। जब प्रोफेसर क्लास में आता है, वो पढ़ाता नहीं है, वो पूछता है, मिस्टर मोटानी क्वेश्चन, मैंने तो सुना ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो 45 मिनट्स वो गुजारता है क्लास के अंदर, वो सिर्फ सवाल जवाब होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो पढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर दे चुका है पहले आपको, राइट? नंबर 1। फिर उसका टीए होता है, टीचर असिस्टेंट या प्रोफेसर असिस्टेंट, वो क्लास लेता है, वो ट्यूटोरियल लेता है, फिर आप उस क्लास में जाके एनरोल होते हैं, जिसके क्रेडिट नहीं मिलते आपको, पर वो में जाना जरूरी होता है, बिकॉज वो आपको समझाता है कि ये इस टॉपिक में प्रोफेसर बात क्या कर रहा था, और इस सवाल का जवाब ऐसे क्यों है, और क्या आप उससे सवाल करते हैं, वो आपको समझाता है। सो मतलब अगर आपके हफ्ते में 3 क्लासेस हो रही, तो वो 3 क्लासेस नहीं, वो एक्चुअली 6 हो रही होती हैं, एंड क्योंकि देन द स्टडीज ऑल्सो, जो ग्रुप स्टडीज हो रही होती हैं, सो बेसिकली जो सवाल यही है कि आपको पार्टी करने का टाइम ही नहीं मिलता नहीं आपको, मिलता। मे बी अगर वीकेंड्स आप पर। हाँ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको पार्टी करने का टाइम आए नहीं मिलता, आपको बिल्कुल नहीं मिलता, राइट? फिर आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं बाय रिसर्च, आपको पढ़ना होता है, लाइब्रेरी जाके पढ़ना होता है, वो मेथड है पूरा, आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, वो आपको पेपर सबमिट करना पड़ता है, आपको बिफोर हैंड, ये नहीं कि आप क्लास में जाके सबमिट करें असाइनमेंट, वो आपको अपलोड करना पड़ता है असाइनमेंट, राइट, पोर्टल के ऊपर, राइट? सो पार्टी करने का तो टाइम, आई डोंट नो, मुझे भी बता दो, मैं भी चला जाऊँ पार्टी करने। यूनिवर्सिटीज के अंदर होती हैं पार्टी, से ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, एब्सोल्युटली पार्टीज होती हैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए। देयर आर मेनी प्रोग्राम्स, क्रिकेट होता है, म्यूजिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लब्स बने होते हैं, वो होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम पार्टी हो रही होती है। बट फॉर वर्क, इफ यू आर enrolled as a person who's working as well, जो permissible hours हैं, वो then you can probably do, बहुत सारे लोग फिर वो वीकेंड्स पे काम भी कर रहे होते हैं। Correct. So yes, that's how it is, right? Because अगर आप undergraduate में गए हैं, so then what happens is you don't study, excuse me, you don't there are no classes on the weekends, right? So weekends में usually क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं या तो कंबाइंड स्टडी कर रहे होते हैं, या वो काम कर रहे होते हैं। ऑल्सो जो आपकी क्लासेस होती हैं, आपको शेड्यूल पूरा मिल जाता है ऑलरेडी, राइट? एज आई सेड, वे बिफोर द सेमेस्टर स्टार्ट्स, कि आपके पहली क्लास कौन सी है, दूसरी क्लास कौन सी है, कौन से असाइनमेंट्स कब ड्यू हैं, एग्जाम कब होगा, क्यूजेस कब होंगे, कौन से क्विज कब होंगे, everything is given to you way in advance, right? So then you can prepare your weekly schedule, कि अगर मेरी आज क्लास सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है, और फिर मेरा अगली क्लास है वो शाम को 4 बजे है, तो बीच में गैप है, तो इस गैप में मुझे या पढ़ाई करनी है या काम करना है। अगर मुझे काम करना है, तो मुझे मेरा जॉब कहाँ पर है, मैं ट्रैवल करूंगा ट्रेन से करूंगा, टैक्सी से करूंगा, उबर से करूंगा, बस से करूंगा,
then you need to plan all these things, right? So एक स्टूडेंट की लाइफ, ऑनेस्टली पाकिस्तान में स्टूडेंट की लाइफ अयाशी होती है, क्योंकि माँ बाप करा रहे होते हैं अयाशी, बट बाहर जाके अयाशी खत्म हो जाती है, एब्सोल्युटली खत्म हो जाती है। तो मैं, अगर माँ बाप पेरेंट्स यहाँ पर हैं, ऑनलाइन हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ये कहूंगा, स्टूडेंट जब वो हाई स्कूल कर लेता है, एफएससी कर लेता है, या ओए लेवल्स कर लेता है, प्लीज गिव देम अ फ्लेवर ऑफ वर्किंग राइट आफ्टर हाई स्कूल। इट्स इंपॉर्टेंट। बेशक वो मैकडोनल्ड्स में खड़ा हो रहा है, बेशक वो केएफसी में खड़ा हो रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज दैट, बिकॉज जब आपका इंटरेक्शन बढ़ता है ना, जब आप काम करते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट या आफ्टर ओए लेवल्स, आप खड़े हुए हैं मैकडोनल्ड्स के ऊपर, आपको आके जब कोई गाली देता है तो वो कैसा फील होता है? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं वही होने वाला है आपके साथ, फिर क्या करोगे? वो तो आपका अपना मुल्क भी नहीं है, आप फिर क्या करोगे, राइट? सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि बेशक हम पाकिस्तान में जैसे भी रहते हैं, whatever status you, financial status, socio-economic status you come from, it's absolutely all right. It's a confidence building exercise. और जब आप बाहर जाते हैं, you will see high school kids in 8, क्योंकि समर वेकेशंस के अंदर या विंटर वेकेशंस के अंदर आप देखेंगे 7-Eleven पे, मैकडॉनल्ड्स पे, केएफसी पे, पिज्जा हट पे, डिलीवरी पे, whatever, गैस स्टेशन पे, सर्विस स्टेशन पे, हाई स्कूल के बच्चे काम कर रहे होते हैं छुट्टियों में। माँ बाप, नॉट बिकॉज माँ बाप, एक तो माँ बाप उनको डालते हैं प्रेशर, एब्सोल्युटली, पर स्कूल और कॉलेज की तरफ से भी प्रेशर आता है, गो वर्क, इट्स इंपॉर्टेंट। तो देन आपको मालूम पड़ता है कि यार काम आसान नहीं होता है, while you studying as well, and then whatever you make obviously goes into your saving and it's an experience, right? So I request all the parents कि ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ, और आई थिंक हमारे माँ बाप ने भी यही किया हमारे साथ until I graduated, फिर मैं घर छोड़ के चला गया, और I was a spoiled brat. I don't know if my mom's listening to me right now live in Pakistan. She must be laughing कि जब मैं उठता था तो बिस्तर भी नहीं बनाता था, और जूते इधर हैं और ये सब उधर है। बट जब आप बाहर जाते हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वो बहुत बहुत रोना आता है, और फिर घर भी याद आता है। Yeah. Yeah. I think जो आपने ये बात की, घर भी याद आता है, I think a lot of kids might also be going through homesickness. Yes, absolutely. यार मैं अभी भी होम सिक हो जाता हूँ कभी कभी, and I kid you not. It's a common phenomena, right? Absolutely होम सिकनेस हो जाती है। तो वो होम सिकनेस के लिए ऑप्शन क्या है, कैसे दूर? दो चीजें हैं। आई थिंक द बिगेस्ट आंसर, वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव जमात खाना, वी हैव इंस्टीट्यूशंस, राइट? अपने लोग होते हैं, जाओ बात करो, घुल मिलो, आपके जैसे, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो उसी सेम प्रोसेस से गुजर रहे हैं, right? And then institutions are available to help. So for example, और I think मैं इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। I think पाकिस्तान में भी काफी अवेयरनेस शुरू हो गई है। जब हम बीमार होते हैं, राइट, फिजिकल बीमारी हो जाती है, गला खराब है, खांसी हो गई, बुखार हो गया, या कुछ और हो गया, चोट लग गई, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, राइट? और उसमें कोई दवाई ले लेते हैं, whatever, पैराडोल ले ली या कफ सिरप ले लिया, whatever। पर जब हम मेंटली फिट नहीं है, या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, या मैं स्ट्रेस हो गया है, तो वो उस हेल्प में वो हेल्प लेना जो है वो कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। सो रीच आउट टू इंस्टीट्यूशंस। जब आप ओवरसीज होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो एब्सोल्युटली आस्क भाई यार, यू नो, आई एम नॉट इन माय राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, what should I do? And then institutions, Jamaati institutions will help you out. Imran, I think you are. जी अकबर, I think that is a very good way. हमारे पास obviously अब तो खैर video calls, audio calls, everything is available. You can always talk back home and everything. I think एक आखिरी सवाल, and then we'll going towards the conclusion के, what do employers think now while hiring? I mean, you've been in the industry for so many years, and what are they seeing in terms of foreign education or domestic education on your resume? How important is that now? I'm a country manager for a large organization. I hire people on a daily basis, not hire, fire होता है कभी कभी, but not every day.
I hire people on a very regular basis. So मैं resume देखता हूँ. To be honest, we never see कि कौन कहाँ से पढ़ा हुआ है. We don't look at. Even our fresh graduates, nobody looks at where you've graduated from. What we look at is, while you were studying your undergraduate, what projects you have worked on, right? उस project का outcome क्या था? That's what I look for as a hiring manager. अगर मैं fresh, तो दो options है ना, या तो मैं experience को hire कर रहा हूँ, या मैं fresh graduates को भी hire करता हूँ, right? Locally, I hire local Thai people here. So अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आते हैं. By the way, Thailand के अंदर there's a university जो top 50 में है world के अंदर for the management programs, right? So and that university mostly international students पढ़ते हैं उस university के अंदर, बैंकॉक के अंदर है. So वहाँ से भी graduate होते हैं, और कुछ rural areas की universities हैं, वहाँ से भी होते हैं graduate. Difference है, right? But we don't look at कि कौन कहाँ से graduate हो रहा है. किसने जो है वो $10,000 पर सेमेस्टर फी भरी है और किसने $1,000 पर सेमेस्टर फी भरी है. Doesn't make a difference. What makes a difference is what project you have worked on, और उस project में what have you learned and what was the impact of that project during your study. Correct. And I think, in fact, some employers in the world have a more difficult process to get into that company, even more difficult than you followed for getting to university, such as Google, Amazon, जो top consultants of the world हैं, like Boston हो गया, McKinsey हो गया, they have a more difficult, वो आपको university से ज़्यादा tough time they tend to get into their organizations while interview process and test वगैरह, right? Correct. So अभी तो जैसे I have the opportunity to work with McKinsey. Currently I'm engaged with them on a different capacity, but not working for them, but kind of with them on different projects. Yes, absolutely. These large four, what we call as big four, right? PwC, McKinsey, EY, Deloitte of the world, absolutely, they have very tough program to get into. But also what they have is called graduate programs. They have international graduate programs. Now with international graduate programs, they allows you to apply for regardless wherever you graduated from, right? And there's a criteria to go through it. So उस क्राइटेरिया को उतना जरूरी है. फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप हार्वर्ड से पढ़ रहे हैं, MIT से पढ़ रहे हैं, येल से पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, yes, it does matter. These universities matter, and there's a reason why these universities matter. कि जब आप उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो आप पढ़ नहीं रहे होते, आपकी ग्रूमिंग चल रही होती है थ्रू आउट, right? It's not about कि वहाँ पे प्रोफेसर आके क्या पढ़ा रहा है. It's about the experience, the grinding that you go through. वो अगर आपसे $1,00,000 साल का मांग रहे हैं, तो $1,00,000 साल का इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि आपका कोई वहाँ पे, yes, good professors are there, but it's actually the grinding that they make you go through, right? That's why these universities are known for what they are known for, right? So yes, not everybody gets into those universities, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज में जाके ग्रेजुएट होके नहीं पढ़ सकते. तो मैं अगर अपनी बात करूं, I'm a graduate of Iqra University, Pakistan. Right, so it doesn't matter. So what even अगर आप Google का apply करें, I mean I work Google apply करें, Google Cloud Platform या Google की job के लिए apply करें, तो उनका अपना एक test mechanism है. They make you sit down for a test. It doesn't matter where you study. Honestly, it doesn't matter where you graduated from. अगर आप Google में apply कर रहे हैं, it doesn't matter. They have their own test depending on what program you're applying for, what job you're applying for, and there's a test. You just sit for the test. That's it. Right. I think technology companies may more and more people are speaking to. I think 20% of the employers have said that they're looking at degrees, but it's usually the hard skills and the courses जो आपने किए होते हैं, especially in technology side. अच्छा, एक और बड़ा interesting सवाल आया कि एक और चीज मैं उसकी quickly बता दूं. उसकी वजह ये है projects की, because it tells you a lot of things. Your capacity. Are you a team player? You're not a team player. आपकी leadership skills, soft skills है ना, वो soft skills. Today अगर मेरी कंपनी में काम करना है तो मैं आपको ट्रेन करूंगा, राइट? मैं आपको सिखाऊंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, मेरा कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है, प्रोग्रामिंग कैसे. आई विल टीच यू ऑन द जॉब. वो मेरे लिए मसला नहीं है. मेरे लिए मसला ये है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज और सॉफ्ट स्किल है ना, वो क्या क्या है. दैट्स द की. So yeah, I think एक बड़ा interesting सवाल एक और आया है कि
हम सिर्फ एकेडमिक्स की बेसिस पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और प्रोजेक्ट्स देखते हैं, या फिर जो हमारी ECAs लाइक इफ यू गो इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक्स और इवन वॉलंटरी सर्विस हमारी चूंकि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है यूनिवर्सिटी? वॉलंटरी इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं उसको हम हाईलाइट नहीं करते। मैं रेज्यूमे देखता हूँ, सपोज पाकिस्तान से कोई अगर स्माइली बच्चा अप्लाई कर रहा है, बॉय स्काउट्स करीमाबाद पाकिस्तान, राइट? अब उस बॉय स्काउट्स में तुमने क्या किया मुझे क्या पता यार, मेरे यहाँ भी बहुत सारे बॉय स्काउट्स हैं, राइट? वो आप बॉय स्काउट में सिर्फ बॉय स्काउट थे या कुछ काम भी किया? कैंपिंग में भी गए, जमूरी में भी गए, कुछ किया? हाईलाइट नहीं किया ना, सिर्फ लिख दिया बॉय स्काउट। दैट डजंट मीन एनीथिंग टू मी much. Yes, you are part of Boy Scout, which is good, but I cannot identify your leadership skill. I cannot identify your other skills from that one line of Boy Scout, right? So that's important. Do highlight that. हम highlight नहीं करते. So yes, it does matter, but ये नहीं कि आपने उस पे एक पेज भर के अपनी सिर्फ वो लिख दी, नहीं. Just highlight 3-4 bullet points. Major work that you've done as a Boy Scout, your voluntary skills. अगर आप आखिर एजुकेशन सर्विसेज में काम कर रहे हैं, AKF में काम कर रहे हैं, AKRSP में, जो भी, right? Voluntary services, highlight कि मैंने क्या किया in voluntary capacity में, what have I contributed? That's important. मैं वही बता रहा हूँ ना कि जॉब पे, रेज्यूमे पे, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको अपने आप को बेचना होता है। अब वो आपके ऊपर है कैसे बेचते हैं अपने आप को। True that. I think some questions I'm getting on the chat is अच्छा बताएं जाना चाहिए। I think different topic पे चले गए from education to now going into a career job side पे, okay? Yeah, I'm okay with that. Yeah. So the thing is, because you see, बहुत सारे लोग, but again, they're thinking about 10 years down the road and saying, okay, so let's say if I want to study and then abroad and I get a job and then I work there as well, what are employers really looking for foreign degrees or not? So that was related to that. But अगर कोई सवाल जैसे chat पे लोग पूछ रहे हैं कि हम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, I think that's a very personal decision where, as I explained earlier in the beginning, कि we can just give you information about the challenges and opportunities. हमने बहुत बातें की, अकबर ने हमें अपने personal information भी दी, personal experiences भी बताए. Thank you very much for being candid like that, Akbar. I think if I concluded and asked the last few sentences on what is the advice for our young students in Pakistan in terms of the topic? Okay, so there are a couple of things, I mean not couple, more than couple of things actually that I would say. Number one, देखो opportunities बाहर पढ़ने की हैं, available, absolutely हैं. जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आपका personal decision है, पर yes, मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि फायदे और नुकसान क्या होते हैं बाहर पढ़ने के। फायदा absolutely yes, आपको exposure मिलता है when you study abroad. For example, आज हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तानियों के बीच में पढ़ते हैं और एक kind of सोसाइटी में रहते हैं। जब आप ओवरसीज आके पढ़ते हैं, so then you are dealing with every person living on this earth from all walks of life, from all backgrounds, right? आप बैठे हैं जो आपकी नेबरिंग कंट्री से भी आ रहा है, right? हर नेबरिंग कंट्री से आ रहा है, आपकी जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री सब हर जगह से आ रहा है, सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, कल्चर अलग अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग हैं. So you are studying in a classroom with all multicultural, diverse, pluralistic society. So yes, that learning, I think you cannot get, unfortunately, in Pakistan today. Maybe tomorrow, maybe yes. I'm hoping that happens soon. But today, yes, that doesn't happen, right? So that learning is everybody has its own. For me, that is very, very important. So yes, वो advantages हैं, absolutely, right? वो exposure मिलता है आपको, वो आपको groom करता है. दूसरा challenge क्या आता है? इसकी cost है. ये free में नहीं मिलता. एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ओवरसीज पढ़ने की, इस एक्सपीरियंस को गेन करने की, राइट? वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वो जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ना, दो चीजें हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? या तो उसको, अगेन मैं थोड़ा अकाउंटिंग के आ गया हूँ, या तो आप इसको एक्सपेंस देखेंगे, कॉस्ट में डालेंगे, या आप इसको इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, वो ये आपके ऊपर है, राइट? कि अगर मैं ये बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरी कॉस्ट है या मेरी इन्वेस्टमेंट है? अगर इन्वेस्टमेंट है, परफेक्ट, देन यू विल गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट. Absolutely. Not maybe in first 4 years, 5 years, but yes, 10 years down the road, you will get a return out of it. Absolutely. But अगर आप उसको कॉस्ट में देख रहे हैं, उसको एक्सपेंस में देख रहे हैं, फिर तो आपको ये है ना कि यार वो जो 4 साल मैं पढ़ रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट, या मैं 2.5 साल 3 साल 2 साल पढ़ रहा हूँ मास्टर्स के लिए,
तो फिर क्योंकि वो कॉस्ट है या वो एक्सपेंस बन गया है मेरे लिए, तो मुझे तो वो पूरा करना है, मुझे उसको जीरो करना है बैलेंस शीट को फॉरेन से, राइट? तो वो फिर माइंडसेट डिफरेंट है, राइट? तो वो चैलेंज है सबसे बड़ा। तो एब्सोल्युटली एडवांटेजेस हैं और कुछ आई वोंट से डिसएडवांटेज है, बट चैलेंजेस हैं जो हमें देखना होगा और हमें उस पर काम करना होगा, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टू फेस दीज चैलेंजेस। सो दैट आई वुड आंसर। और सवाल आपने मुझसे पूछा कि क्या बाहर जो जॉब पे हैं, क्या वो इंटरनेशनल डिग्री काउंट करती है कि नहीं काउंट करती है? यार मैं अगर मैं 4 साल सिंगापुर, 3 साल सिंगापुर में था, 10-12 साल ऑस्ट्रेलिया में था, आई बीन ट्रैवलिंग फेयर, आई सी पीपल, आई हायर पीपल। जब मैं हायर करता हूँ इंटरनेशनल लोग, तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो इंडिया से भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो ईरान से भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मेरे तो सब इंटरनेशनल है, राइट? तो मेरे तो सब इंटरनेशनल है। तो फिर मैं ये तो नहीं देख रहा कि जो पाकिस्तान का बच्चा है क्या उसने यूएसए से पढ़ा है, इट डजंट मैटर टू मी। So I think the message is कि study abroad, is there a real question कि study किया जाए? Mostly it is कि आप study करें इस field में जिसमें आप excel कर सकें, and that good university could be in Pakistan, could be anywhere nearby, or a faraway country like the West. So I think ये जो myth है कि शायद दुनिया में कामयाब नहीं हो सके या अच्छी job ना मिल सके, I think in this new world order ये सब बातें वो हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। फर्स्ट इसके वाकई में आपकी स्किल्स अच्छी हैं कि नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की टॉप कंपनीज में हर तरह के लोग आ रहे हैं। जैसे आपने कहा एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट और अ डोमेस्टिक, इट मैटर्स हाउ मच सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, एंड हाउ मच यू कैन सेल योर ओन सेल्फ, करेक्ट। यू नो। या दैट इज एक मोर लास्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन मैं कर दूं, किसी ने लिखा है, सर व्हाट वर योर स्ट्रगल्स इन चेंजिंग करियर, इज इट वर्थ इट? यस, इट वाज वर्थ फॉर मी, राइट? आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने अपने बहुत साल गवाए, यस। मैंने आपको कहा कि मैंने मैट्रिक किया, एफएससी किया, फिर मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, तो मैंने 2 स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन से पढ़ी, तो मेरे वहाँ कुछ साल गए। फिर जब मैं बैचलर्स में स्विच हुआ तो मेरा 1-1.5 साल वहाँ चला गया। फिर जब मैंने करियर स्विच किया तो मेरे 2 साल वहाँ चले गए। Absolutely worth it for me. But again, I'm not saying everybody should do it, right? It all depends how you look at it. Challenges, struggles, absolutely. There were a lot of challenges, a lot of struggles, and I tell you, mom, dad, sorry, I'm saying it now. जब मैं अपना career switch कर रहा था, from even study switch कर रहा था, from FSC to OA levels, my parents were my biggest challenge. They were in a shock कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और मैं पे ओए लेवल्स पे चला गया हूँ, या मैं अपना करियर स्विच कर रहा हूँ। So yes, challenges थे, but again they supported me. Once I made the decision, then they supported me as well throughout. So challenges होते हैं, absolutely होते हैं. How convinced you are, how passionate you are, it all matters. How persuasive you are, right? And how persistent you are. अगर आप सिर्फ, बहुत से लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि सेटल होना है यार, सेटल तो आप, अगर यही फोकस अगर आप देखें, चाहे पाकिस्तान के कोई भी हालात हो, राइट, सेटल होना है तो आप पाकिस्तान में भी अच्छे से सेटल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, राइट? यस, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस कहाँ नहीं है। मैं थाईलैंड में हूँ, आई लिव इन अ कंट्री जहाँ पे आई डोंट स्पीक द लैंग्वेज, राइट, बट आई एम सेटलिंग हियर। सो चैलेंजेस हैं, एब्सोल्युटली हैं, राइट? सो देन द क्वेश्चन इज, एम आई रेडी टू टेक ऑन दोस चैलेंजेस? Am I scared? क्या मैं वापस चला जाऊं ऑस्ट्रेलिया, क्या मैं वापस आ जाऊं पाकिस्तान, राइट? सो चैलेंजेस होते हैं, बस चैलेंजेस से ये है कि उसको पॉजिटिव वे में देखो, एंड यू विल फाइंड द वे आउट। और सबसे लास्ट कमेंट बिफोर आई टेक लीव और व्हाटएवर, इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस, मोर देन हैप्पी टू आंसर। प्लीज reach out to institutions when you go for international studies. Your local institutions in Pakistan, या आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, reach out to them, inform them, seek help from them, and when you go overseas, inform them prior, not last minute. एक आखिरी सवाल मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि while I was part of the ANZ settlement team, मुझे फोन आता है मुखी साहब का जमात के रात को कि somebody has landed at Sydney airport, have no place to go, right? अब उस मौके पे what am I supposed to do?
somebody has landed, somebody found out from the मुफ्ती साहब number, उन्होंने मुफ्ती साहब को contact किया कि मैं सिडनी पहुंच गया हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, और मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो 2 महीने बाद शुरू हो रही है। तो अगर यूनिवर्सिटी 2 महीने बाद शुरू हो रही है, इसका मतलब है तो वो काम भी नहीं कर सकता, वो जो पार्ट टाइम काम है जो जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट अलाउ होता है वो भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसका वीजा जो स्टडी है वो शुरू ही नहीं हो रहा है, वो 2 महीने है, और वो 2 महीने पहले आ गया है और रहने की जगह नहीं है, राइट? सो that puts you in a difficult situation, it puts institution in a difficult situation, to help and assist, right? So don't do this last minute pe, don't reach out, please reach out to institutions for help and guidance, and whatever capacity they have, I can assure you institutions will help you to the best of the knowledge and capacity. I think on that note, I think we should end, because we've covered pretty much everything: challenges, opportunities, myths, what you should know earlier. And I think most importantly, we have guidance. In webinar के हवाले से भी हमारे लोकल एजुकेशन बोर्ड्स, हमारे रीजनल एजुकेशन बोर्ड्स में करियर फैसिलिटेटर्स अवेलेबल हैं, जिनसे आप जाके जब बात करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि 50 से ज्यादा लोकल एजुकेशन बोर्ड्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे रीजन्स हैं। सर्टन सिटीज में अगर कोई सर्टन एक्सपर्टीज ना हुई तो वो आपको कनेक्ट करेंगे दूसरे जुरिस्डिक्शन से। और अगेन इफ यू अगेन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की बात है तो वो आपको वहाँ के कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं। अगेन आपकी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आई थिंक जो गलत चीज में हम फंस जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, वी वांट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान मोर देन कि हम अच्छी पढ़ाई हासिल करना चाहते हैं वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, विदाउट थिंकिंग कि वो यूनिवर्सिटी किस शहर या मुल्क में। क्योंकि बहुत सारे शहरों में अगर आप जाते भी कनाडा वगैरह में, यूनिवर्सिटीज उस शहर से बहुत दूर होती हैं, तो एक्चुअली आप गांव में पढ़ रहे होते हैं और आप ख्वाब देख रहे होते हैं टोरंटो के। तो इस तरह से भी जो है वो आप लोगों को ये रिसर्च में होना चाहिए। सो थैंक यू, आई थिंक thank you very very much, Akbar, for taking out the time. I think that must be close to midnight at your place, and thank you very much for sharing knowledge with us. आपको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी दावत देंगे। हमारे पास कोई सवाल अगर आए ईमेल पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हम आपको जरूर फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप दैट यू tried to answer all your questions, but we are well over time, 1.5 hours. We still have 42 participants. At one point we reached 60 participants. Thank you very much जी। आपका हमारा जो करियर वेब सबस्टैक का जो ईमेलर आता है उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि और किस तरह के वेबिनार्स आपको रिक्वायर्ड हैं और क्या जमात की नीड्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड अल्लाह हाफिज। Thank you. Thank you.